Namaste, Vidya Khusro. I, Javin Arjubanu, Assistant Professor in Education and Methodology at JVW. Today I will discuss you about write a program to use a grid layout. मैं grid layout यूज करके ऐसा एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है। तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ टेक ए पैक फोल्डर फाइल्स पैकेज, जो है मैंने एक फाइल बन करके एक पैकेज फोल्डर्स क्रिएट किया। आफ्टर देन वी हैव टू take a classes of java.awt and javax swings, all classes of java.awt and javax swings is import. And then we have to define a class as a public. My grid layout is a class, it is defined as a public. So we have to take a frame. First of all we take a frame, jframe up. So jframe up is a to create a frame, and after then we define a my grid layout functions. My grid layout functions, then first of all we create a frame equal to new jframe functions. So after then when your frame is created, after then you create a all buttons into a frame. Then all buttons created defined, and all buttons are added into the frame. So we have to define the a all buttons. J button b1 equal to new j buttons 1, and j button b2 equal to new j button 2, and j button b3 defined equal to new j button 3, and j button b4 equal to new j button 4, and j button b5 equal to defined a new j button 5, and j button b6 defined a new j button 6, and j button b7 equal to defined a new j button 7, and j button b8 equal to defined a new j button 8, and j button b9 equal to defined a new j button 9. All buttons are defined in a frame. So we have to create a 9 component as a button. So all 9 component as a button to store add in a frame. So first of all we defined all 9 component, 9 buttons. After then we add all buttons into a frame. So we have to add all buttons in a frame. We take a f is a frame, f dot add b1. F dot add b1 means b1 button is a add into a frame, and f dot add b2 button is add into frame, and f dot add b3 button is add into the frame, and f dot add b4 button is add into the b4 frame, and f dot add b5 button is adding into the frame. Similarly, b6 button is also adding to the frame, and b7 button also adding to the frame. B8 also adding to the frame, and B9 button also adding to the frame. All buttons are added into the frame. After then, when your frame is created, after then you button also created into a frame, then we decide a grid layout. Whenever you want to create a GUI, so you follow a 4 step. First step is to create a container, that means frame, and after then you create a component, that means component buttons. Then you use a layout, your layout grid manager, layout managers. It means your button is generally placed in a container, which form, flow, grid, border. So use the layout managers, and after then we use a custom graphic. Custom graphic means your background of GUI applications, which is color of buttons. So all used are custom graphics. After then, when you set a layout manager, so we set a layout manager as a grid layout. So frame f dot set layout, we have to layout manager are used to new grid layout. New grid layout is 3 3. It means grid layout is a represented as a grid cell in form of row and column. It means these are a 3 3. So 3 means 3 row and 3 columns. Button are represented in 3 row and 3 columns. So setting grid layout of 3 rows and 3 columns. After then we set a frame size using a set size of dot set size. Set size is a to set a size of set a size of frame. It means when you create a frame, what is dimension is required to a frame. So defined a dimensions. It means width and height into a frame, which you used. So we have to use 300 and 300. That means
300 is a height of the frame, and 300 is a width of the frame. So we have to declare a dimensions using a set size method. Set size method is also used to provide a method to define a dimensions of a frame. So after then we use a set visibles method. Set visible method is used to set visible boolean. It means when we use the set visible boolean method are used to this condition is true or false. If condition is true, then GUI is represented in form this we are located into a container. So up dot set visible, it means set visible give a output true. So then function is doing work. And फिर after then public static void main string argument. It means first of all main function is declare a grid layout. My grid layout class declare main function. So when we call a main function, the string go to the my grid layout class. After the new grid my grid layout, new grid my grid layout is called, and after then go to the class of my grid layout, and to continue the code executed one by one, and to return it as a output according to the coding. So we start to run this program. So I will start this program. So we run to this program. Run output like this form. Can see like this form. Here. Sorry. Yeah. I have to share this. I required. Sorry. Share. इसको शेयर करके दिखाते हैं आपको एक मिनट. न्यू शेयर किया और ये आपका आ गया रिजल्ट. ये देखो आपका रन करने के बाद इस फॉर्म में रिजल्ट आएगा आपका. ये देखो आपने ग्रिड लेआउट एक फ्रेम क्रिएट किया कर लिया. उसके अंदर आपने 9 बटन्स क्रिएट किए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो मैंने यहाँ जे बटन्स जो है डिक्लेयर किया. ये 9 बटन्स क्रिएट हो गए. अब मैंने इन बटन्स को किस लेआउट मैनेजर में क्रिएट किया? ग्रिड लेआउट मैनेजर. ग्रिड लेआउट मैनेजर में क्या होता है? आपका ग्रिड सेल फॉर्म में आपके बटन्स अरेंज होते हैं रो और कॉलम फॉर्म में. तो मैंने यहाँ ग्रिड सेल क्या लिया? 3 यानी मेरा 3 जो है रो होगा, 3 कॉलम्स हो गए. इस अरेंज में बटन अरेंज हो गए. तो ये देखो मेरा 3 रो में 3 रोज जो है 1 2 3. ये मेरे बटन इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से मेरे बटन अरेंज हुए. उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको विजिबल किया. अगर मेरा कंडीशन ट्रू है तो ये मेरे को फ्रेम जो है विजिबल होगा. तो मैंने यहाँ ट्रू कंडीशंस लगा दिया फ्लो में, और ये मेरे को इस तरीके से आपका आउटपुट रिजल्ट आ रही है. देखो सारे. और ये लुक एंड फील, आप जिस बटन को आप प्रेस करते हो वहाँ पर एक मतलब हाईलाइट होता है. वो बटन हाईलाइट होता है. इट मीन्स वो स्विंग स्विंग फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं हम साथ में. ये जे जो होता है, इस जार जो जे यूज करते हैं इस स्विंग में यूज करते हैं. अगर आपको AWT में करना होता है तो सिर्फ हम बटन B1 इक्वल टू न्यू बटन्स 1 ऐसे क्रिएट करते हैं. पर हमें लुक एंड फील वाला चाहिए तो हम ऐसे जे बटन क्रिएट करते हैं जिसमें आपको इस तरीके से. फिर इसकी जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन मैंने इसको सेट साइज के थ्रू 300 मेरा ये डायमेंशन इस तरीके. इसकी हाइट ये जो है इतनी होगी, ये विड्थ इतना होगा. ये इसकी हाइट इतनी होगी, ये विड्थ इतना होगा. तो इसके मैंने डायमेंशन सेट कर दी सेट साइज थ्रू के थ्रू. तो ये मेरा एज ए आउटपुट आ गया. दिस सेशन इज कंप्लीटेड बाय डिजिटल सेशन 2.0. थैंक यू.